जय गोर्खा र नमस्ते म रुद्र याम्फू र भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यस भिडियो चाहिँ हो एसआर को विषय लिएर र हजुरलाई थाहै छ आसाममा अहिले एसआर लागू भइरहेको छ र जहाँ तहाँ अहिले आसामको हरेक कुना कुनामा एसआर को हेरिङहरु चलिरहेको छ। हेलो স্যার হয় স্যার মোৰ নামতো ডেট বুলি লিখিছে নহয় আজি। তোৰ নামত ডেট কোনে লিখিলো? নহয় নহয় কোনো বিএলও লিখিছে মোৰ নামত ডেট বুলি। তোৰ নামত ডেট তোক দি দিলে। মোক ডেট বুলি লিখি দিছে এতিয়া চাকচোন। মই মানুহটো জিন্দা ঘূৰি আছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক ডেট বনাই দিলে আজি। এইটো কোনে কৰিলে? ই আকৌ ডেট লিখি দিলে। চাকচোন স্যার এতিয়া এটা কি কৰিম এতিয়া নিজে দল কৰি যদি নিজকে বচাব নোৱাৰো। এইটো কিবা ভুল হৈছে নেকি? এনেকুৱা ভুল হ'ব পাৰে নেকি স্যার কওকচোন? মই কালি চাই দিম ৰ। মোৰ নামতো ডেট বুলি লিখি दिसे। चाइ लौ र। भिडियो मार्फत थाहा पाउनु भयो होला एकजना जीवित मान्छेलाई पनि एसआर को लिस्टमा डेट भनेर आएको छ। यो चाहिँ एकदमै सोच्नु पर्ने कुरो हो, त्यो पनि एकजना बीजेपी को लिडर को। तो यो भिडियो बनाउनको मेन कारण यो हो कि हाम्रो गोर्खा मान्छेको चाहिँ कसैको पनि नाम कर्तन नहोस्। अगर कसैको कर्तन पनि भएको छ भने हजुर तुरन्त गएर बिओलसँग आफ्नो पुरा डकुमेन्ट्स लिएर हजुर आलोचना गर्नु होला। साथै हाम्रो कुनै पनि सांगठनिक कर्मी छमा छ भने उहाँहरुसँग हजुर डिस्कस गर्नु होला र हजुर एकदमै अलर्ट बसिदिनु होला र भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला ताकि हाम्रो गोर्खा मान्छेको कसैको पनि यो एसआर बाट नाम कर्तन नहोस् भन्ने कारणले गर्दा। जय गोर्खा।